उन ड्रग्स को यूज कर सकते हैं जिनकी ऑलरेडी टॉक्सिसिटी डिटरमिन हो चुकी है ह्यूमन सिस्टम के अंदर क्लिनिकल ट्रायल से. यू कैन रीपर्पस दैम. कन्वेंशनल प्रोसेस जो है ड्रग डिस्कवरी और ड्रग डेवलपमेंट का, दैट गोस लाइक दिस एंड यू कैन चेक द ईयर्स. मींस फर्स्ट स्टेप 2 to 3 years, then again 2 to 3, then 7 to 10 years, and then 2 to 5 years to get the approval. But when you use drug repurposing, it takes very few years to go to the final thing. Means एक ड्रग जो है ऑलरेडी डिफाइन हो चुकी है कि इसका ये फंक्शन है, आप उसका एक नया फंक्शन डिफाइन करते हैं क्योंकि इसका ये फंक्शन भी हो सकता है. वो ड्रग अप्रूव्ड है, यू कैन यूज इट फॉर योर पर्पस बिकॉज उसकी टॉक्सिसिटी ह्यूमन सिस्टम्स के ऊपर डिटरमिन हो चुकी है. दैट्स अ वन वे टू डूइंग दैट. Okay, drug repurpose is you signature match, then you do the visual screening of that particular drug. Literature is with you, and then you also do the network-based pharmacology studies. So network-based pharmacology studies also are not new domain, but it involves the bioinformatics in which you just check which particular proteins are interacting with the other proteins and how they are matching and missing things. So these are the repurposed drugs which are available in the market. And then there is a database of repurposed medicines. You can see there are a lot of repurposed drugs are available in these databases. Then we come to molecular docking. So we got our hits, we got our protein structure, target structure. Now we are at the third step that we have to do the docking thing. Docking, of course, this is a process. Many of you maybe are doing this, and this is an easy step, but it is a trickier one. Again, you have to check many things that either your docking is correct or not. Even you got the protein ligand complex. आपने देखना है कि एनर्जी मिनिमाइजेशन कितनी हुई है, कैसे हुई है. either उसने परफेक्ट साइट के ऊपर बाइंड भी किया है कि नहीं किया, या आपने कई दफा उस साइट को पर्टिकुलरली फर्दर ऑप्टिमाइज करना होता है. खैर उसके ऊपर अभी हम बात करते हैं. सो दिस इज अ प्रोसेस. आई थिंक यू पीपल आर वेल अवेयर कि आप एक साइट सेलेक्ट करते हैं, देन वी गॉट द ग्रिड बॉक्स, अल्टीमेटली वी गॉट द डॉक कंपाउंड. So these are the docking algorithm on which there are different softwares are available. So these are the docking tools which are the famous one. Autodock is the most famous, the most cited one tool, and then there is also an unending list of these tools. Servers की भी list है, tools भी हैं. You can do docking anywhere. Okay, there are certain bottlenecks. We got the hits but not the leads. This is the problem. We have to optimize the certain hits to make it a druggable candidate. So this is another thing कि अगर आप चाहते हैं कि आपने कोई सिंथेटिक केमिस्ट्री से आप बिलोंग करते हैं, आपका काम ऑर्गेनिक सिंथेसिस के अंदर है या फ्यूचर में आप करते हैं, तो आपने उस कंपाउंड को मॉडिफाई करना है इन सच अ वे दैट इट बिकम ड्रगेबल, ये ड्रग कैंडिडेट बन जाए. Okay, then alternate strategies, it involves the chemical libraries involvement, molecular modeling, which includes lot of techniques. QSAR भी है, then उसके बाद कामसिया है, कामफा है. There are a lot of them where people use that. Okay, visual screening. Visual screening, this is a technique in which you use thousands of the compounds against one target. कि उस टारगेट के साथ कौन से कंपाउंड बेस्ट बाउंड कर रहे हैं. So that is the visual screening. क्या virtually कंप्यूटर के ऊपर, of course, आप अगर अपनी लैब के अंदर आपके पास कंपाउंड है 1,00,000, आप उनको स्क्रीन करना चाहेंगे, इट विल टेक लॉट ऑफ वीक्स एंड वीक्स कि आप उनको स्क्रीन करके एक टारगेट को आइडेंटिफाई कर सकें. बट व्हेन यू आर वर्किंग ऑन द कंप्यूटर, व्हाट यू कैन डू, यू कैन ऑप्टिमाइज द सर्टेन लीड कंपाउंड, सर्टेन टारगेट्स, एंड देन यू जस्ट पुट इट अगेंस्ट अ पर्टिकुलर टारगेट कि क्या टारगेट हो सकता है. कोविड के पीरियड के अंदर जो ड्रग्स भी इवन डेवलप हुई हैं बाद में, दे आर बेस्ड ऑन द विजुअल स्क्रीनिंग. उन्हें विजुअल स्क्रीनिंग के प्रोसेस के ऊपर जो है वो डेवलप किया गया है. इवन देयर इज अनदर प्रोसेस व्हिच इज कॉल्ड इनवर्स स्क्रीनिंग. उसके अंदर क्या होता है कि आपके पास एक से ज्यादा प्रोटीन के स्ट्रक्चर होते हैं और आप कोई सिंगल कंपाउंड लेके एंड यू डेवलप देम इन सच अ वे दैट दे बिकम एक्टिव against the certain biological targets. That is the pharmacophore modeling, that is the mapping thing, and you modify these particular features. Cellular level, there are the different things, different permeabilities. There are certain barriers which are present. A drug has to cross the barrier and then it has to reach into the cell or into the nucleus. And especially if you are targeting the cancer cell, then again whole scenario will be changed. That you have to also target it to the certain cell. Again you have to modify the certain compound. Then ADME properties, you need to modify it, you can predict it. This is another thing.
अगर आप किसी भी कंपाउंड के ऊपर काम कर रहे हैं तो लैब में सिंथेसिस से पहले यू हैव टू target, you have to check its admin properties, and then along with all of these things you do a process which is called hybrid virtual screening. You do the hybrid virtual screening, and then there are certain MD simulations. Sometimes you get a complex of the ligand and the proteins, then you still have to check it, because in the real time system the things are different. You have to put the certain water atoms, you have to put the certain salts in it, you have to make a buffer virtually, and then you give the complex a whole conditions in which the cell is present. So for example, this is a video in which a peptide that is being docked to a certain receptor, and then you can see that how it binds in the real time in the different systems. डॉकिंग में यूजुअली क्या होता है कि किसी एक पर्टिकुलर प्लेस के ऊपर आपका कंपाउंड जो है दैट बाइंड्स देयर एंड दैट इज जस्ट स्टे देयर इन द रिजिड डॉकिंग. बट इन दिस प्रोसेस क्या हो रहा है, आप इसके अंदर रियल टाइम के अंदर देख रहे हैं कि हाउ डिफरेंट अमीनो एसिड्स दे आर जस्ट इंटरेक्टिंग विद द योर लिगेंड. Ligand can be anything. Here ligand is a peptide molecule. You also use your small molecule ligands. So molecular dimensions, spectral dynamics, they just provide you insights that how your compounds they will behave in the real system. So in silico systems, what I'm doing, I'm working on different things. In silico, I'm working on the docking, modeling, MD simulation, QSAR, DFTs, and then there are certain biological things which I am working on, but they are not wholly related to here. But I am working on certain biological activities, gene expression studies, whole genomics, mapping, metagenomics, proteomic mass specs. And याद रखें कि ये जितनी बाकी टेक्निक्स हैं, they are necessary to publish in the high impact factor. कि जब आप अपने डॉकिंग, सिमुलेशन, इन स्टडीज को मिक्स एंड मैच करते हैं बाकी चीजों के साथ, then you achieve a better thing. Okay, now there are certain stories जो मैं बहुत quickly आप लोगों को बताऊंगा, even you can replicate in your computer, in your lab. So this is the cardioprotective activity which we done in 2022, in which we just got certain targets which were the anti-inflammatory, and they are involved into the cardiac protection factor, that if you just inhibit them, they may protect you from the cardiac things. We combine it with the in vivo studies, then there's anti-leishmanial studies, and see we use the certain targets in the leishmanias, like paradoxal kinase is there, then there's a trypanothione reductase is there, and then there's a peptide activities. We synthesize, means one of my collaborator, they synthesize the peptoids. They are not the peptides, peptoids, and then we did the DFT studies, we did the docking studies on that particularly, and we checked that either they contains the Alzheimer things. And in these studies, what we did another thing which is called umbrella sampling. Means देखिए हर चीज का एक चेक होता है. जैसे मैंने आपको कहा कि लिगेंड प्रोटीन कम्प्लेक्स आपको मिल गए हैं, then you can check it by using the MD simulations. MD simulations को जब आपने चेक करना है कि either they are right or wrong, then you do the umbrella sampling. आप umbrella sampling के जरिए उसको चेक करते हैं, because sometimes क्या होता है कि आपके थीसिस के रिव्यूअर्स या रेफरीज जो है पेपर के, आपको वो कहते हैं क्योंकि आप इसे भी प्रूव करके दें, either that is the correct one or not, then you have to do certain other things. So that was studied in the human acetylcholine esterase हमने की थी. Then pesticide biosensors, we use certain pest enzymes and other pest enzymes, biosensing thing. And then we did also the SARS-CoV-2 study, and in these studies we use the certain targets of the SARS-CoV-2, and then usually the structures are available online. We did almost every structure which were the important one, and this is the main protease one. We did almost 500 nanosecond simulations in this study. We studied the different domains, that how the different natural compounds they bind to the certain different regions of these main proteases. Then there is another papain-like proteases. It's the same study, and we have studied the different domains, that how different variations are present in the binding things. These are the RNA dependent polymerase are present here, and then these are the certain targets which we identified from a database of 5,000 natural compounds, and we identified certain things that these compounds they can be better binder to these certain targets.
We also studies the multi-enzyme substrate, that enzymes they can bind to the certain targets, means more substrate to a certain enzyme. We also did anti-amylase and glucosidase activities. That's very common. People used to do it. Anti-diabetic activity के तौर पे इसको करते हैं. आप इसको in silico भी जो है वो कर सकते हैं by using the different targets. Pesticidal activity you can also do that. And then antimicrobial studies very famous. आप में से अक्सर लोग बल्कि हर second student जो है वो usually antimicrobial activity कर रहा होता है, ठीक है. और डॉक्टर शाहिद साहब के पास तो रश होता है एंटीमाइक्रोबियल एक्टिविटी का, हर दूसरा बंदा भेज रहा होता है अपने सैंपल. तो यू कैन डू इट आल्सो इन silico 1. You can identify the certain targets from, for example, here we did E. coli, Staphylococcus aureus. तो Staph aureus और E. coli के different targets लेके उन्हें identify किया, check किया गया. Then there are certain things. We also combine this study with the TFT1 कि जिसके अंदर एक collaborator ने synthesize किए थे compounds and we further check it for antibacterial studies. This was on the essential oils. Essential oils के ऊपर हमने जो है वो check किया different compounds को. These were the anti-arthritis studies. जिसके अंदर मेरे जो कोलैबोरेटर्स थे उन्होंने इस पे काम किया कि कैसे जो है माउस मॉडल डेवलप करके उन डिफरेंट टारगेट्स को चेक किया जा सकता है. एंड वी डिड आल्सो द डॉकिंग फॉर दैट फॉर द प्रूविंग. हमने इसमें जीन एक्सप्रेशन लेवल्स भी चेक किए और उनको भी को रिलेट किया विद द इन सिलिको स्टडीज. एंड देन दिस इज अनदर स्टडीज जिसके अंदर आर्बुटिन, पहले में एजिलिक एसिड था, देन एब्रोटिन था, देन यूक्लिप्टोल था. सो दिस वाज अ सीरीज ऑफ द स्टडीज जो कि हमने की एंटी आर्थराइटिक मॉडल के ऊपर. देन देयर आर लॉट ऑफ एंटी कैंसर स्टडीज कि जिसके अंदर यू यूज द सर्टेन टारगेट्स which are important in the cancer. You can inhibit them, you can use that. Then anti-Alzheimer studies, you use the different enzymes. Most important one is the acetylcholinesterase enzyme. You can use acetylcholinesterase enzyme as a target. So these are the few studies with the anticholinesterase which we have done in the last few years. So if you are especially working on certain mutations, you can also do the mutational studies by using these computational tools. And then, so this is another mutational study. And then this is the thing which I was calling about the inverse docking, which we did and we check. We have taken almost every protein, every important protein in the human being, and then we use the certain target which we identify. We try to do the inverse virtual screening in which one ligand and many protein structures were present, and we checked it. We identify the certain things. We make a database of total whole proteins. We optimize them, we model them, and then we check that either they are interacting, and we also check the non-specific binding of the targets. Okay, either our particular ligand that is binding non-specifically or not. So also we did the DNA docking. Especially in the cancer studies, the certain compounds they bind to the DNA. So we also done the DNA studies. So what you people can do? You people can do these disease selection, target selections, homology modeling, active site identification, inhibitor generation, rigid docking, ligand crowing, flexible docking, binding affinities. So all these things you can do very easily on your computers. This is for you people. अगर आपके पास लैब में रिसोर्सेज कम हैं, आप ये समझते हैं कि आपकी लैब में फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स हैं, चीज़ें नहीं हैं, you can use your laptop even and then you can perform all these studies on your laptop. अच्छा, आप उससे भी कुछ अच्छा करना चाहते हैं, you can use Jupyter notebooks online. आप इसको ऑनलाइन भी कर सकते हैं. एंड इवन इफ यू कंप्लेन कि ओके हमारे तो डिपार्टमेंट में एमडी सिमुलेशन के लिए वर्क स्टेशन नहीं है, हम वो नहीं कर सकते, हम अच्छी डॉकिंग नहीं कर सकते, या हमारे लैपटॉप्स विजुअल स्क्रीनिंग नहीं परफॉर्म कर रहे, तो फिर आप क्या करेंगे? यू कैन रन देम ऑन द क्लाउड्स. गूगल की जो कोल लैब है वहाँ पे कई ऐसे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, आप फ्री विजुअल स्क्रीनिंग कर सकते हैं, स्क्रिप्ट्स अवेलेबल है. Amazon क्लाउड आपको प्रोवाइड करता है कि आप थोड़े से पैसे देके आप पूरी की पूरी एक एमडी सिमुलेशन रन कर सकते हैं उसके ऊपर. दे जस्ट अलाउ यू टू इंस्टॉल योर ओन सॉफ्टवेयर ऑन दैट. आप DFTs प्रोवाइड जो है रन कर सकते हैं, आप पूरा गॉसियन उसके ऊपर जो है इंस्टॉल करके उनके सिस्टम पे यू कैन जस्ट रन इट. आप उसको रन कर सकते हैं अपने पर्पस के लिए. देयर आर ऑनलाइन यूरोपियन सर्वर्स आर प्रेजेंट in which you can do modeling thing, docking thing, visual screening. ये तीन चीज़ें तो फ्री होती हैं. Then अगर आप MD simulations और DFT की तरफ जाना चाहते हैं, you have to pay a little, but it worth it. जब आप उसको देखते हैं उस काम को कि वो कितना important है, it worth it. So next generation drug development, तो I think थोड़ा सा मेरे पास टाइम है, okay? तो मैं next generation drug development की बात करूँगा कि machine learning के अंदर जो है how that is very helpful. So that is the totally new domain. Where comes artificial intelligence?
जहाँ पे हमारे पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आती है. It has developed the certain models which we use, जिसके अंदर AI है, ML है, DL है, and then there is a big data analytics है. Ultimately, we are getting the next generation drug modeling. So machine learning, machines, they learn from you and then they give you the answer, the smart answers out of what they have learned from you people. So machine learning, that's not a new domain, but biological sciences के अंदर इसकी एज जो है वो थोड़ी कम है. अगर आप इसको लर्न करना चाहते हैं, that's not very difficult and that is totally new for the biological scientists especially. So there are a lot of application in AI in the drug development. So you can apply it in pharmacology, repurposing thing, clinical trials, prediction, the action of the compounds, identify the sites, hits, and you can also do the synthesis of drug-like compounds. So this is the process, this is the years in which these particular things has been developed, and we are